Dear students, welcome back to Education World, and we are discussing, this ICSC practice paper or sample paper. तो वहाँ पे हमने जो लास्ट जो क्लास था तो उसमें डिस्कस किया था. So basically this will be in two parts, in your question paper. So section A and section B. And last class हमने सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस पेपर है तो उसका डिस्कशन किया था. तो आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन बी. ठीक है, चल देखते हैं सेक्शन बी में क्या है. तो ये जो है, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन सेक्शन बी में है, गिव एन एग्जांपल विथ IUPAC नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस. ये जो फर्स्ट नो ए का क्वेश्चन है, तो ये अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों का क्या क्या करना है, एग्जांपल देना है विथ केमिकल फॉर्मूला along with IUPAC नेम. जो अल्कोहल होता है वहाँ पे क्या होता है, सो बेसिकली वी आर हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH. ओके, तो उसका जो फर्स्ट मेंबर है क्या होने वाला है, सो द केमिकल फॉर्मूला दिस विल बी लाइक ए CnH2n+1OH. तो n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हम डाल सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन वी कैन डू द नोमेनक्लेचर. सो इफ वी फॉर एग्जांपल हमने ये n इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होने वाला है, सो दिस विल बी CH3CH2OH. ठीक है, तो उसका जो IUPAC नेम क्या होने वाला है, सो बेसिकली दिस इज योर नो 2 कार्बन and functional group you have to start. So basically this is 1 2, so this is eth 1-ol or ethanol. ठीक है, so this is the first second member of the alcohol. The same way you can do like this. If it is n equal to 1, so then methane or methane 1-ol or methanol. Okay, uh, the depending on the carbon, so you can do the things very easily. तो उसके बाद जो एल्डिहाइड है उसका नो जो जनरल फार्मूला क्या है, सो बेसिकली जनरल फार्मूला अगेन CnH2n+1. तो उसके बाद ये क्या रहेगा, CHO. ओके, सो दिस इज द जनरल फार्मूला. और हम n इक्वल टू ऐसे नो इफ वी यूज 2 तो उसमें क्या आने वाला है, सो बेसिकली n इक्वल टू हियर इफ वी पुट n इक्वल टू 1 तो इसमें आएगा, सो बेसिकली दिस इज CH3CHO. सो इफ वी पुट n इक्वल टू 0 तो यहाँ पे भी फिर नो फॉर्मल्डिहाइड आने वाला है और मिथानॉल आने वाला है. लेकिन यहाँ पे सो बेसिकली जस्ट वी आर पुटिंग n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या होने वाला है, सो दिस इज अगेन 1 2. तो ये क्या बनने वाला है, इथानल, इथेनॉल और इथानल. ओके, सो द एल्डिहाइड ग्रुप, बिकॉज ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या सफिक्स आना चाहिए, ये एल और इथ 1l. ओके, द सेम वे we can do the general formula of carboxylic acid. ये क्या होने वाला है, CnH2n+1 COOH. ठीक है, so again if we put n equal to 1, so this will be CH3 COOH. ठीक है, तो इसका क्या होने वाला है, so basically again 1 2 carbon, we are having 2 carbon, so this will be the ethanoic acid. ethanoic acid क्या है, so basically if we are having a functional group carboxylic acid तो वो क्या होने वाला है, oic acid. तो इसमें 2 carbon we are having, so ethanoic acid, so that is together ethanoic acid. ठीक है, in the next questions ये पूछ रहा है, so basically write the IUPAC name for the following compounds. ये जो compounds है ये देखना, so basically इस पे रूल क्या है, जो फर्स्ट जो कंपाउंड है क्या है, लॉन्गेस्ट चेन जो वो ढूंढना है. तो क्या है यहाँ पे, सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रेट चेन. तो ये नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4. सो वी कैन डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड. So here which is a functional group, so this has to give the lowest locant value. तो इसीलिए क्या इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमारे पास कितना कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है. तो रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट. और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन में एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है और जो 2 कार्बन में OH है, और OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. तो
तो ये सफिक्स में आने वाला है. So basically this will be like a 3 chloro, then root word for 5 carbon, paint, पेंट, देन टू पोजीशन में हमारा क्या है, ऑल है, सो पेंट टू ऑल. ठीक है. सो दिस इज द नेम एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू. ओके. तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, सो बेसिकली दिस इज ए ब्रांच चेन, वी हैव टू डू इट केयरफुली. ठीक है. तो यहाँ पे जो कि सबसे नो लॉन्ग चेन वी हैव टू फाइंड, तो जो लॉन्ग चेन आने वाला है तो उसमें क्या आने वाला है, सो बेसिकली इफ यू काउंट लाइक दिस, वन वन फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6, और 5 6 दोनों भी सेम है. सो अगेन द सेम वे, द अदर वे if you count like this, 1 2 3 4 5 6, so you can go this way and also this way, but if you go this way both are same, so you can consider any one. तो उसके बाद हम किधर से जाएंगे, तो इधर से जाएंगे, और सो बेसिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो यहाँ पे जो है, सो बेसिकली जो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है ये दूसरा कार्बन में है, और इधर से जाएंगे जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है ये तीसरा कार्बन में है. तो लोएस्ट लोकेटेंट वैल्यू के लिए कहाँ से जाना शुरू करना चाहिए, सो दिस इज फॉर दिस वे, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6. We can go the other way also, then again it will be the same. Okay, so it does not matter. तो इसका जो अभी nomenclature क्या होने वाला है, so now you see you are having two substitution. so क्या है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, लेकिन ये दोनों में कौन फर्स्ट आएगा. सो बेसिकली इफ यू से दिस विल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो मिथाइल है इसका एम से शुरू होता है, और जो इथाइल है ये ई से शुरू होता है. सो अल्फाबेटिकली द इथाइल विल कम फर्स्ट. तो इसका जो नोमेनक्लेचर होने वाला है, सो दिस विल बी लाइक ए फर्स्ट इथाइल विल कम, सो यू हैव टू मेंशन इथाइल फर्स्ट. तो यहाँ इथाइल कहाँ पे है, सो वी आर हैविंग एट 4 पोजीशन. सो 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितना कार्बन है, वी आर हैविंग हेक्स, सो बेसिकली 6 कार्बन, सो हेक्स एन, हेक्स एन. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल एल्केन है, यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन नहीं है और कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो दिस इज ए नॉर्मल हेक्सेन. लेकिन यहाँ पे क्या है, दो सब्स्टिट्यूशन है, 4 पोजीशन में इथाइल, 2 पोजीशन में मिथाइल. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड गिव इट सिग्निफिकेंस. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मेनली द ओल्ड डेफिनेशन वाज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड पाया जाता है, सो बेसिकली व्हाट एवर द अवेलेबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन लेकिन जो अभी जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है, सो बेसिकली व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ये क्या है, हाइड्रोकार्बन. सो बेसिकली एज वी नो, हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड, इट इज मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. So this is, if a compound contain carbon and hydrogen, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन. और उसका डेरिवेटिव, so whatever the compound which can derive from this hydrocarbon, so basically that is called the no, their derivative. Okay, so for example again, if we take no, methane. So methane is a hydrocarbon, and their derivative it could be like, if we substitute one hydrogen with the chlorine, so this will be methyl chloride. Or one hydrogen if we substitute with the OH group, so that will be methanol. So these are all the organic compound. The same way we can take like this C2H6. तो इसका जो कंपाउंड है ये इथेन है, तो इसका एक ऐसे ही हम बना देंगे एक क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन, जो इथाइल क्लोराइड और इथानॉल. तो ये जो कंपाउंड है, सो बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव ऑफ इथेन, एंड दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. ठीक है. तो ये है हाइड्रोजन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड गिव इट सिग्निफिकेंस. सो बेसिकली इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मोस्टली we are having the carbon based compound, and this is what present in this compound also. Okay, so this is why we call this is
the organic compound. So organic compound mostly deals with the hydrocarbon and their derivatives. Again, we did not talk about the functional group. So again, if you substitute the functional group, so basically we are doing, again, if we take consider the carboxylic acid. तो उसमें क्या है? So basically, if ethane, if you take again same, so one carbon, if you substitute with the carboxylic acid, so basically this will be COOH. ओके, सो अगेन सेम इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इथेन, तो इसीलिए ये जो होता है सो बेसिकली ऑल आर देयर डेरिवेटिव। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। The next question is a matching, column matching. So basically we are having something left side and the right side. Okay, तो ये देखते हैं क्या है। So basically ammonia and carbon dioxide. So ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्शन करेगा। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन करके क्या होता है। So basically as we know this is urea. Okay, so this is like a, this will be our 3, okay, in the urea. And ammonia plus oxygen in presence of platinum. So this is we learn this is preparation of the nitric acid. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली वी नीड ऑल्सो वाटर, तो उसके बाद क्या बनेगा नाइट्रिक एसिड और अमोनिया के सल्फ्रिक एसिड. सो बेसिकली दिस विल बी द सेम टू एंड फॉर दिस अमोनिया एंड सल्फ्रिक एसिड ये बनेगा अमोनियम सल्फेट. सो दिस विल बी द वन ammonium sulfate we use. This is a fertilizer we use ammonium sulfate. Urea also we use as a fertilizer. And the nitric acid इसका जो इंडस्ट्री में बहुत सारे जो एप्लीकेशन है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between the following pairs based on the information given in the brackets. तो ब्रैकेट में जो है सो बेसिकली द डिफरेंशिएट ये जो है एल्केन्स एंड एल्काइन्स. सो जनरल फार्मूला क्या है. सो बेसिकली व्हाट एवर द जनरल फार्मूला विल राइट. सो फॉर एल्केन्स वी नो दिस इज CnH2n+2. ये है जनरल फार्मूला फॉर एल्केन. और एल्केन का क्या होगा. सो बेसिकली CnH2n ये जो है ये जनरल फार्मूला फॉर एल्किन. So alkene, this is CnH2n, and if it is an alkyne, so then CnH2n-2. You have to remember. So frequently this is you can expect in your question in different way. Okay, so now try to remember this. So basically this is very important. Alkane general formula CnH2n+2. तो यहाँ पे जो n है n equal to you can put any number or then so basically if you put 2, so basically carbon number of carbon present is 2 and hydrogen present into 2 into 2 plus 2, so that means 6. Okay, the same way you can do the for others, and this is very important for your board exam. Okay, so the difference between the hydrochloric acid and ammonia. So by टेस्ट में क्या होता है. सो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी नो दिस इज एसिड एंड एसिड टेस्ट ये क्या है खट्टा टेस्ट होता है. सो बेसिकली दिस इज योर शॉर्ट टेस्ट. एंड दो एमोनिया सो इट इज लाइक ए अल्काली. सो बेसिकली इसका जो टेस्ट है सो बेसिकली अगेन सो द योर सोप इज मेड ऑफ अल्काली. if you can taste the soap, so you will understand. So basically it is like a I don't know how to say. So this is like a little like a, not exactly bitter, a bitter like taste, or we can say the alkali like taste. Okay, then let's see the next questions. Next question is, it is very important questions not only for your board exam as well as for the competitive exam. The nitric acid is formed during the thunderstorm is a result of 3 chemical reaction. Write the balanced chemical equation in form. तो ये जो हमारा जो थंडरस्टॉर्म होता है सो बेसिकली इन ड्यूरिंग द डिप्रेशन और बारिश होने से पहले, तो उसमें क्या होता है नाइट्रिक एसिड भी होता है और इसीलिए हम कभी कभी एसिड रेन होता है और जो बेसिकली द टेस्ट ऑफ रेन वाटर इज वो खट्टा होता है. सो क्यों होता है. सो बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है तो बेसिकली एट हाई टेम्परेचर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं 2NO बनते हैं. सो ये बैलेंस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर. सो बेसिकली दे आर आस्किंग द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. कोई भी जितना रिएक्शन है वो बैलेंस करना पड़ेगा. तो उसके बाद क्या है जो फिर ये रिएक्शन होता है. सो बेसिकली
2NO, it reacts with O2 and it forms 2NO2. Okay, so again, so first there is a nitrogen, it combines, it forms the nitric oxide, then further oxidation it forms nitrogen dioxide, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और वाटर along with the oxygen present in atmosphere, तो इसमें क्या बनते हैं, HNO3 बनते हैं. तो ये जो है important है. So basically this is not the right balance, so basically we have to do the 4NO2 and this 2H2O, so maybe now it will be balanced. So we are having total 4 8 and 8 10 12, so we are having 12 oxygen and 4 hydrogen, okay, and 4 nitrogen. So this is the balanced reaction, and these are the reaction it is happening during the thunderstorm, and as a result we got the acid rain. ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला वाला क्वेश्चन क्या है. सो बेसिकली now give the names and the structural formula of the saturated hydrocarbon having 10 covalent bond. तो ये कैसे पता चलेगा जो 10 कोवैलेंट बॉन्ड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो इसका जो पहले जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्या है, एल्केन है, उसका जो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2. तो इसका मतलब है हम कोई भी नंबर ले लेंगे तो उसमें क्या है, सो बेसिकली CC bond will be there and CH bond will be there. So again I'm here, let's understand the trick. So first if you put 1 n equal to 1, so this will be CH4. इसमें कितना बॉन्ड है, so we are having 4 bond. If we take n equal to 2, तो उसमें क्या आएगा, so basically we are having C2H6. इसमें कितना बॉन्ड है, so basically 6 bonds with the hydrogen and 1 CC bond. तो इसीलिए क्या आएगा, so basically we will have like this. If you draw, we will have 7 bonds. So first if you increase 1 CH to 8, क्या देखना, so basically here you are having 4 and then with the 7, so basically for each CH2 unit you will have 3 bonds. Okay, तो इसमें अभी C2H6 के लिए 7 bond आ रहा है. So basically if it is a C3H8, so that will be give you the 10 bond. So like that you can calculate any number of bonds, if any number of bonds is given, so you can derive the compound. Okay, then अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ 2 डबल बॉन्ड्स. सो इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए. एक जो अनसैचुरेटेड कार्बन है तो 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो इसके लिए कितना चाहिए, सो बेसिकली फॉर दिस एटलीस्ट यू नीड, फॉर यू एटलीस्ट 5 कार्बन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और मे बी द 2 4 इज ओके. सो दिस इज योर CH2. ठीक है, तो ये जो है, सो बेसिकली यू कैन डू 1 2 3 4 कार्बन. सो बेसिकली 1 4 ब्यूटाडीन. ठीक है, so this is the first member of double 2 डबल बॉन्ड. तो इसमें 2 डबल बॉन्ड आएगा. तो ऐसा और भी हो सकता है. सो बेसिकली इफ यू रिमूव, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम and if you shift the double bond, whatever you can write, but this is the simplest example. So this will be your, what would be the name, so the name will be like a again 1 2 3 4. The IUPAC name will be the BO, okay, 1 3 diene. ठीक है, ऐसा आने वाला है. So then the next is a molecule in which central atom is linked to 3 other atom. ये जो है, सो एक्चुअली ये जो सिलेबस में जो है, सो एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल, like a NH3 if you remember. So basically preparation of ammonia, तो उसमें क्या है, so basically this is your central atom nitrogen, तो उसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है. तो this is the simple example for, this is according to your syllabus. Okay, we can have many other example, but यहाँ पे क्या है, ammonia, this will be a simple example for you. तो उसके बाद क्या है, जो आंसर द फॉलोइंग. तो इसमें क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इथीन गैस. इथीन क्या है, सो बेसिकली इथेन, तो ये जो है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये है इथीन. इथीन गैस होता है. सो बेसिकली
this is like a sweet smell, and this is like a स्वीट स्मेल होता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक। एंड ये क्या होता है बेसिकली, इट इज नो insoluble in insoluble in water, ठीक है। सो दीज आर द नो द नो मेजर इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या होता है, सो बेसिकली नो इट इट डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। Okay, so these are the simple example of this. And then again, the how can ethylene undergoes oxidation. तो ये जो इथाइलिन क्या है, so ethylene is nothing but the same ethene, so this is also called ethylene. So oxidation का मतलब है, so basically it is reacting oxygen addition. So for simple no example, so basically if we do the reaction or if we do the combustion, so it is now asking the other way, so what you will do, what will happen if you do the burning of your ethene or ethylene, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सो बेसिकली यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, ठीक है। सो इफ यू वांट एनी हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो इसमें क्या होगा, सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। And it can undergoes also the reaction, so mainly if it did not ask any reagent, so mainly specifically it is asking the reaction oxidation, means the combustion or reaction with the oxygen, okay। Then this is a by simple one word, the identify the underlying word in each of the following. So basically the type of reaction alkene undergoes. तो alkene alkene क्या है, so basically double bond। तो ये डबल बॉन्ड नो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपली इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, अब हेलोजन और नो हेलोजन एसिड कुछ भी ऐड करो तो उसमें ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज द सिंपल यू कैन अंडरस्टैंड द एडिशन रिएक्शन, ओके। देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO फंक्शनल ग्रुप, जो CH फंक्शनल ग्रुप रहता है वो कंपाउंड क्या होता है, सो बेसिकली जनरली एल्डिहाइड, जो इसको क्या बताते हैं, एल्डिहाइड। एंड अरेंजमेंट डन टू डिजॉल्व HCl इन वाटर, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये क्या होता है, सो HCl solubility of HCl is very high, so that is why we cannot during the HCl preparation we cannot put the HCl directly in water। so उसमें if you can remember, so basically we put a funnel in this, we take a container and fill with the water, and top of this water we put a funnel, and that funnel is connected to the your reaction container or the reaction mixture where you are doing। so basically the round bottom flask, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे मिक्स होता है और HCl बनता है। so this is it is called the funnel arrangement, funnel arrangement, ठीक है। this is called the funnel arrangement because you are putting funnel top and then you are putting, so basically if you do not put funnel, so basically because of the high solubility of HCl in water, तो इसमें क्या है, पूरा जो HCl ये इसमें डिजोल्व होके इसमें क्या है, जो रिएक्शन कंटेनर जो है, so basically if you are having the round bottom flux here, so basically you will have no uh, no vacuum here, so basically you will have an empty space and this water will come out and it will spoil your reaction. To stop that one, so basically we are having funnel arrangement for dissolving HCl gas in water. नेक्स्ट देखते हैं, सो अगला क्वेश्चन क्या है, सो दिस इज लाइक ए कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स यूजिंग ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। द गैसियस हाइड्रोकार्बन इज वन, द गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये इन दोनों से कौन गैसियस हाइड्रोकार्बन है, और फाइल द लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा नो इफ यू थिंक इट इज लिटिल ट्रिकी, क्योंकि हम पता है हाइड्रोकार्बन ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें जो मिथानॉल है वो OH भी है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी होना चाहिए था। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैसियस है, तो मीथेन क्या है, ये
नो gaseous है और methanol ये liquid है. So basically this will be the option hydrocarbon. The gaseous hydrocarbon is methane and methanol it is liquid, so methane will be the option. While liquid hydrocarbon यहाँ पे जो है ethane है, ethane भी gas है, so basically the ethanol will be the hydrocarbon which is liquid. Okay, so if you can again if you change the exchange the order, so then again it will be different. So ethane, this is your gas, this is your gas, and this is your liquid, and this is gas, this is gas, and this is your liquid. ठीक है. So the next question, or yeah, maybe the last question. So basically in this, so name of the following. So basically a gas which acts as a hormone responsible for ripening the fruits. जो हम केला पपीता जो होता है, so basically ये पकाने के लिए जो केमिकल्स यूज होता है और जो एक्चुअली गैस यूज होता है, तो वो क्या है. सो बेसिकली दिस इज योर इथिलीन और एसिटिलीन, दोनों ही ये होता है. And this is also called the artificial ripening agent. तो ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों ही है. ठीक है. And basically the mostly they use like this one. So basically from the calcium carbide, and they do reaction with the water, and then the gas they put in the fruit container, something like that. तो उसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन विच इज यूज टू मेक टेट्रा इथाइलेट. जो टेट्रा इथाइलेट क्या है, सो बेसिकली यहाँ पे बता दिया गया है. सो बेसिकली दिस इज योर C2 टेट्रा इथाइल, this will be your ethyl group, and tetra this is lead. And how can we get, so basically this is your alkyl. If you take like a C2H5 chloride or bromide, so if you take so a bromide, and then so this is the hydrocarbon used, and this is a very important chemicals, tetraethyl lead. तो ये क्या होता है, सो फ्यूल में यूज होता है एंटी नॉकिंग. सो बेसिकली एंटी नॉकिंग रिएजेंट के, सो बेसिकली दिस इज एज ए एंटी नॉकिंग रिएजेंट. तो ये इथाइल टेट्राइथाइल लेड वो उसका यूज होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, तो इसमें क्या बताते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किन फैमिली आर रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्मूला. सो जो एल्किन है तो उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे CnH2n है, पता है. तो लेकिन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू n and 2n सिग्निफाई. सो यहाँ पे सेम सिंपली n मींस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो n इक्वल टू, सो बेसिकली n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम present in the molecule, and 2n equal to number of hydrogen atom present in the molecule. ठीक है. So this is what just simply you have to mention like this. And then what is the name of alkene when n equal to 4. तो हमारा n equal to जब 4 है तो ये है कितना, 4 कार्बन है. just we can write simply, you do not need to think. So basically n for 4, so carbon 4, so this will be but, and then in, so this will be butane. Okay, this will be the simple general name or IUPAC name. So butane, sorry, yes, butane, क्योंकि ये in है. और then what is the formula of the alkene when n equal to 4. So basically again you have to write the formula. तो यहाँ पे सिर्फ यही 4 डाल देंगे तो वही आ जाएगा. So basically this is C4H8, यही है formula. And if it is, you can draw also like this. So basically CH3 CH2 CH double bond CH2. ठीक है. So this is your butane, and you can count the carbon and hydrogen. Okay, so I hope no you understand this, and ये सबका अब सभी को एग्जाम के लिए मतलब फायदेमंद होगा. So I hope you enjoy this session, and thank you for your attention.